A very good morning, dear student. Welcome back in today's class. So, dear student, as you know that in the previous class we discussed about the heat and temperature, and also we discussed about the different scale for measurement of temperatures. That is Celsius scale, Kelvin scales, and Fahrenheit scale. And after that, we also discuss about some precautions in handling the thermometer. Means what are the precautions, what are the things that should be kept in our mind when we are using a thermometer. So now, dear student, in today's class, we are going to discuss some difference between the temperature and the heat, and then we also discuss some different methods by which the heat can be transferred from one material to one place to another place, or you can say that how the transfer of heat is taken place. So there are the different methods in that we discuss about the conduction, convection, and radiations. So now without any delay we start today's class. So in today's class, first we discuss about the difference between temperature and heat. So first, we are going to discuss difference between. We are going to discuss some differences between the heat and this temperature. So now, dear student, everybody see in your textbook page number 54. So very common general the observation we already seen at many times in many activities at our home. So there is a bucket of water at the temperature of 30 degrees Celsius and a mug of water at the same temperature, that is means water 30 degree. Means एक bucket के अंदर अपने पानी भरा हुआ है, दूसरा एक मग के अंदर, दोनों का जो temperature है वो 30 degree Celsius है. Now can we say that both contain the same amount of heat? क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में जो हीट है वो एक जैसी है, एक ही अमाउंट की हीट है? Obviously not. Why it is not? Because this the heat is depends on water. Heat is depends on the nature of a substance and the mass of an object or mass of a substance that we take. Okay. So as the amount of the heat in a bucket of water is more, because it contains the more water. मीन्स जिस कंटेनर में या बकेट के अंदर ज़्यादा जो वाटर है उसका टेम्परेचर, उसके में हीट क्या होगी, उसमें टेम्परेचर दोनों का सेम है 30 डिग्री सेल्सियस, बट जिसका मास ज़्यादा, जिसमें अमाउंट ज़्यादा है वाटर का, दैट कंटेन द मोर अमाउंट ऑफ हीट. सो two bodies being at the same temperature does not mean that they have the same amount of heat. मीन्स कभी भी या कतई ये कहने का मतलब ये नहीं है कि यदि दोनों का टेम्परेचर, कोई भी दो कंटेनर हमने लिए, उन दोनों में टेम्परेचर यदि सेम है तो उनकी हीट भी सेम होगी. ये कभी भी पॉसिबल नहीं है या कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है. ओके. सो हीट एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास एंड द नेचर ऑफ द सबस्टेंस. So this heat energy depends on water, two things: the nature of substance, and second thing it depends on the mass of a substance or mass of a material or substance. So now there are some difference given page number 54 in the tabular form. So we go through that differences. First, heat. So as you know that this heat is the amount of energy. Heat is nothing but water. It is the amount of, as I told you that in earlier at the beginning of this chapter, this heat is a water, it's a form of energy, it's a kind of energy. So this heat is the amount of energy present in a substance. कि किसी भी substance के अंदर जो heat का amount है वही आपका क्या है, that is energy का जो amount है वही आपका heat है. Second thing, it is measured in the calories and joule. Means this energy is measured
जो इसको अपन नापते हैं या मेजर करते हैं वो या तो कैलोरी के अंदर या फिर जूल के अंदर अपन मेजर करते हैं, कैलोरी किलो कैलोरी जूल या किलो जूल के अंदर मेजर करते हैं। थर्ड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन मास। एज आई टोल्ड यू दैट दिस हीट is a form of energy and it is depends on the mass of an object, temperature and nature of the substance. Means it depends on three things: mass of substance, temperature of substance, and third thing nature of substance. So these three things on which this heat is depends. And if we are talking about the temperature on the other hand, so the temperature is what? Temperature means it's a degree of hotness and coldness. Temperature means what? At the beginning of this chapter, I gave the very simple definition for the temperature. Means that is the hotness, the measure of hotness and coldness of an object is called water temperature. Second thing, temperature. This temperature is measured by the three different unit or different three scales, that Celsius scales, Fahrenheit scale and Kelvin scales. And last but not least, it depends on the amount of heat. Means this temperature is depends on the amount of heat. If we give more heat, then the temperature will be greater. It rises, it increases more. If we give a less amount of energy, less amount of heat, it gain a less temperature या it show less temperature. यानी जितनी ज़्यादा आप हीट दोगे, जितना ज़्यादा एनर्जी दोगे, उतना ही हाई होगा टेम्परेचर, और जितनी कम हीट होगी, जितना कम एनर्जी होगा, उतना ही कम होगा टेम्परेचर. सो दीज आर द थ्री मेन डिफरेंसेस बिटवीन this heat and temperature. Now next the topic, that is the transfer of heat. So mainly this transfer of heat is taken place by the three different methods. First one is the conduction. So there are the three different methods. There are the three different methods for the transfer of heat: conduction, convection and radiation. So these are the three different methods or different processes by which the heat can be transferred from one substance to another substance or one material to another material. So now see everybody in your textbook, the page number 55, the transfer of heat. There are some examples, common examples given here or explained here from our daily life. So just we go through this all the examples. So it's very clear for us that how the heat can be transferred from one place to the another places. So now first one, when a vessel containing the water is kept on a stove. जैसे कि आपने देखा घर पे आप स्टोव में या गैस के बर्नर पे किसी भी बर्तन में वेसल्स में पानी रख देते हैं, धीरे 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 वो गर्म होने लगता है. तो वो कैसे गर्म हुआ, है ना? क्योंकि हीट जो है वो उसके बॉटम पे हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पूरा ऊपर वाला भी पानी और साइड से भी वो गर्म हो जाता है. सो द बॉटम पार्ट ऑफ द वेसल्स इज द कॉन्टेक्ट विद द फायर. आफ्टर सम टाइम द टॉप लेयर ऑफ द वाटर ऑल्सो गेट वाटर heated up. That also gets heated up. Why it is? Because the molecules of water that at the bottom that move from upward side और नीचे से वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और वो एनर्जी को क्या करते हैं, हीट को नीचे से ऊपर पास करते हैं. तो इस तरह से पूरा धीरे धीरे साइकिल इज कंटिन्यूली गोइंग ऑन एंड दैट होल वाटर दैट remain in that container became a hot heat up or a warm. Hence heat is transferred from the bottom layer of the water to the top layer of water. और इस तरह से क्या होता है, नीचे की लेयर से. So dear students, there are three different methods of transfer of heat: conduction, convection and radiation. So generally this conduction is taken place in all the three different forms of material. Either it is
in a solid form, liquid form, and a gaseous form. So now first you see everybody at the page number 55. We are going to discuss more about this conduction. Means in conduction how the heat can be transferred. So as we discuss the three examples in our textbook. So in above second example, we see that the vessels that kept on the stove or a burner, we feel hot when we touch it. Why it is? Because the heat can be transferred from the one part to the another part. So how it is? How the heat is transferred? This heat is transferred from the molecules, so that molecules can give heat to the molecules that are nearby that molecules, and this continuous cycle is going on. So why and how does the vessels become hot on keeping it on the stoves? In this case, heat is transferred from a fire to a stove, which is at the higher temperature to the vessels, which is what the lower temperature. After some time, the vessels become hot. Means हम कह सकते हैं कि हीट जो है एक जो पार्ट है वो जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तब वहाँ से हीट जो है वो दूसरे एंड की तरफ पास होना स्टार्ट होता जाता है, जिसका टेम्परेचर क्या है, कम है. सो वी कैन से दैट द हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर. मीन्स ऑलवेज हीट कैन बी पास्ड फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर. और किस पार्ट का जो रीजन, कौन से रीजन का टेम्परेचर हाई होगा, जो बिल्कुल फायर के या बर्नर के, स्टोव के बर्नर के कांटेक्ट में होगा, दैट रीजन इज हैव व्हाट मोर हीट और मोर टेम्परेचर. और जो ऊपर वाला पार्ट है या दूसरा पार्ट है वो क्या है, थोड़े उसके कंपेयर में कम गर्म है या ठंडे है, तो हीट का ट्रांसफर होगा नीचे से वो दूसरे पार्ट में. ठीक है, ओके. Similarly, if the one end of the metal rod is heated, इसी तरह से सिंपली आप एक रॉड को पकड़ के किसी बर्नर पे गर्म कर दे, या स्पून को अपन चम्मच को पकड़ के चूल्हे पे रखते हैं या बर्नर पे रखते हैं या गैस पे रखते हैं, धीरे धीरे अपना हाथ भी जलने लग जाता है. क्यों? क्योंकि एक एंड जब गर्म होने लगता है तो वहां से धीरे धीरे हीट दूसरे एंड की तरफ पास होने लगती है. मीन्स the heat can be transferred from the higher temperature to the lower temperature by which we hold that spoon. Okay, so now there are this phenomena of transfer of heat from the region of higher temperature to that of the lower temperature through a body or a substance is called water conduction. तो ये जो प्रोसेस है कि हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जो टेम्परेचर पास होता है, तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन. नाउ कंडक्शन फॉर कंडीशन फॉर कंडक्शन मीन्स व्हाट आर द कंडीशन. Condition for conduction. Okay. First is the physical contact. And second, difference temperature. So there are the कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंडक्शन. मीन्स कंडक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शर्त है, कंडीशन है, ये तभी कंडक्शन पॉसिबल हो सकता है. सो फर्स्ट द फिजिकल कांटेक्ट. मीन्स द ऑब्जेक्ट शुड बी कम इन कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट, यानी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होगा तब ही कंडक्शन पॉसिबल है. अदरवाइज हीट कैन नॉट बी पास्ड बाय द मेथड ऑफ दिस कंडक्शन. सेकेंड थिंग, now see this clearly given in your textbook, page number 55. The two objects should be in a contact with each other, and second thing, the temperature of object should be different as heat flows from a region of higher temperature to the lower temperature. तो फर्स्ट की फिजिकल कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है. सेकेंड थिंग, there will be a comparable difference between what difference in a temperature of a substance or a material. उसी केस में हीट कंडक्शन के थ्रू पास हो सकता है. सो इन द केस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन ए सिंगल ऑब्जेक्ट,
फिजिकल कांटेक्ट में तभी तो अलग अलग सेपरेट होंगे तभी आएगा, लेकिन एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक यू सी द सिंगल आयरन रॉड, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अपन कह सकते हैं कि एक एंड और दूसरा जो एंड है किसी भी रॉड का जस्ट लाइक दिस रॉड, तो उसका एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया, इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तभी हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा. So from the one heat flows from the one region to the another only if there is a temperature difference between the two regions. Another important point to remember is that the condition heat flows from a region of higher temperature to that of a lower temperature. और दूसरी जो मेन इम्पोर्टेंट है कि एक लोअर टेम्परेचर वाला रीजन होगा उसकी तरफ जो है वो हायर टेम्परेचर से heat pass होगी, means heat can be passed from a higher region, higher temperature region to lower temperature region. Okay, and this the temperature, this heat can be passed until the temperature of both ends become equal, means there will be the thermal equilibrium is set up, कि जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होगा तब तक वो हीट पास होती रहेगी. जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा उस कंडीशन में फिर हीट पास नहीं होगा, एंड दैट सिचुएशन दैट स्टेट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ नेक्स्ट द कंसेप्ट दैट वी सी देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर इज देयर. सो द कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस and solid is very fast, सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे तेज सॉलिड में सबसे ज्यादा कंडक्शन जो है वो सबसे फास्ट होता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ द वाटर द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सॉलिड में जो है वो मॉलिक्यूल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड में सबसे ज्यादा फास्ट क्या करता है, मॉलिक्यूल मूव करता है जल्दी जल्दी और कंडक्शन के थ्रू हीट सबसे फास्ट मूव करेगी. फिर लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, देयर आर द कंपेरेबल स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई इट कैन टेक सम टाइम, जो उसमें फिर कंडक्शन के थ्रू हीट थोड़ा टाइम लगता है पास होने में, और गैसेस में सबसे ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है, सो द कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड फॉलोड बाय देन लिक्विड एंड गैसेस. नाउ देन द वन मोर इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दैट इज गुड कंडक्टर bad conductor. Good conductor means we can say that non-simply conductor, and this is known as an insulator. Conductor means the material or substance which allow to pass heat through them, यानी ऐसे मटेरियल जो हीट को अपने से पास होने देते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, कंडक्टर. फॉर एग्जांपल मेटल्स, और द मेटल्स एग्जांपल्स दिस आयरन, कॉपर, दिस एल्युमिनियम, सिल्वर, दिस Ag, दिस गोल्ड, एल्युमिनियम, etc. So these all the metals are the good conductor of heat and electricity. So that's why they are considered as a good conductor or a simply conductor. क्योंकि इसमें हीट जो है आराम से पास, इजीली पास हो जाती है, ये अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, तो उनको कंडक्टर कहते हैं. Then bad conductor means the insulator. Insulator means the substance material which cannot allow to pass heat through them, यानी वो अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते, उस टाइप के मटेरियल को, सबस्टेंस को क्या कहते हैं, इंसुलेटर और बैड कंडक्टर. फॉर एग्जांपल दिस वुड, प्लास्टिक्स, रबर, पेपर, etc. Many more example is there. So these are the water, simply they are considered as a or known as a insulator because they are not allowed to pass heat through them. Now next we discuss
some the application of this conductor and poor conductor के इंसुलेटर्स के और कंडक्टर के क्या एप्लीकेशन है, हमारे लिए इसका क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे हमारे लाइफ में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो नाउ सी द पेज नंबर 56, the applications of a good conductor and a poor conductor. The cooking utensils are made up of the good conducting materials like steel, aluminium, copper. Why it is? Because this copper, aluminium, iron, these are all good conductor, जिसमें heat easily pass हो जाती है, जिसमें अपना खाना जल्दी जल्दी बन जाता है. There will be no wastage of heat or energy. So these all conductors or good conductors are used for making water, manufacturing in many different kinds of cooking utensils which we use at our home for cooking food. Next one, the handles of the cooking vessels are made up of the bad conductor. And if we see, on the other hand, if we see the handles of the pressure cooker, toaster, so that is made up of water, that is made up of insulator. वो इंसुलेटर का बना होता है क्योंकि उसमें हीट पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, वो इतना गर्म हो जाएगा कि यू कैन नॉट होल्ड इट, उसको पकड़ नहीं पाओगे. तो वो कैसा होना चाहिए, दैट इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर और बैड कंडक्टर लाइक बैकेलाइट, जो ऑलरेडी वी डिस्कस इन अ प्रीवियस चैप्टर. We feel warm on wearing the woolen clothes in winter. During the winter season we use what? Woolen clothes. और woolen clothes क्यों पहनते हैं? क्योंकि woolen clothes जो है एक तरह से वो that trapped air inside it, वो अपने अंदर एयर को ट्रैप करके रखता है, and it provide the insulation layer. एक तरह से इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड करता है. एयर इज ए वाटर इंसुलेटर ऑफ हीट, सो दैट कैन नॉट अलाउ टू हीट एस्केप आउटसाइड एंड वी फील वाटर वार्म फ्रॉम इनर साइड. तो हीट, क्योंकि अंदर की हीट जो है वो बाहर ले जाएगी, तो अंदर हम कैसा महसूस करेंगे, गर्म महसूस करेंगे. दैट्स व्हाई वी यूज वाटर वूलन क्लोथ्स और वी प्रिफर द वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन. Next one, the adaptations. If we see the adaptation in polar animals, polar bear, or penguin or any other. So these animals have what? Fur on their bodies. और फर है या फीदर्स उनके बॉडी पे होते हैं, तो फर और फीदर्स भी क्या करता है, वो भी एयर को ट्रैप करके रखता है और इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड करता है, एंड दैट केप्ट देयर बॉडी वार्म. Okay. Animals and birds keep their bodies warm due to trapped air in their fur or feathers. Aluminium being a good conductor, it is used in solar panels and solar heater. And solar heaters जो सनलाइट से रन करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं. सोलर पैनल जो होते हैं या सोलर हीटर होते हैं, उसमें भी अपन एल्यूमिनियम यूज करते हैं. द हीटिंग पैड ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ आयरन और स्टील. और जो हीटिंग पैड जो होता है इलेक्ट्रिक आयरन का, उसमें भी अपन मैटर जो है वो स्टील यूज करते हैं या कोई कंडक्टर यूज करते हैं, बिकॉज उसमें हीट जो है वो आसान इजीली पास हो जाए. Whereas we use the insulator for making the handle of that iron that is made up of plastic like bakelite. So, and another one examples or applications of these insulators, the inner walls of the thermos flask is insulated bottles which is keep the bottle hot एंड कोल्ड लिक्विड कोल्ड. जो हॉट को हॉट रखता है, कोल्ड को कोल्ड रखता है. जो वाटर बोतल अपन यूज़ करते हैं या हॉट पॉट यूज़ करते हैं खाना रखने के लिए, या थर्मस है या फिर उस टाइप से कैन है, तो उसमें एक इंसुलेशन लेयर होती है, इंसुलेटेड लेयर होती है, जो क्या होती है अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं देती है, ताकि वो अंदर के जैसा एनवायरमेंट है वैसा ही रहे. ठंडा है तो वो ठंडा ही रहेगा, गर्म है तो गर्म ही रहेगा. And the last one, using the two thin blankets together provides more warmth as the air trapped in between does not allow heat to escape. कि सर्दियों में आपने देखा होगा कि एक कंबल से अच्छा है कि दो उसके कंपेयर में पतली या थीन कंबल या ब्लैंकेट लेके यदि ओढ़ के सो जाए, तो उन दोनों कंबल के बीच में एक लेयर बन जाती है.
insulated layer बन जाती है air trapped between them and that provide the insulation to us. So that is better to us as compared to using a single blanket. So these are the some applications of this conductor and insulator. So I hope you guys everybody understood very well, understand these all things, difference between heat and temperature. Then we discuss the different forms for the methods or mode for the transfer of heat, that is conduction, convection and radiation, and then we will explain more in detail about the conduction and then the condition, necessary condition for water, this conduction, physical contact, and second one the difference in the temperature, and last the topic that is the insulator and the conductor and the application of this insulator and the conductor. Okay, so guys, if you have any type of doubt in your mind, you can ask me freely without any hesitation. Okay, so please everybody go through this textbook. It's my personal advice to you everybody. So once again, thank you, have a nice day.